Yeah. Any questions from what we discussed last time? Any questions? No question as such, sir. Okay. So we've completed with our forecasting, correct? हमने जो मॉडल बना रहे थे उस पे बैलेंस शीट वगैरह टैली हो गया, करेक्ट हमेश? Yes, sir. And today we have like corporate strategy was planned. Yeah. So in fact, we started corporate strategy last weekend. So we'll continue from there. So we started with level 2. Are we expecting more to join in or should I start? Sir, let me. Sir, I think Anjani is not there. Baki to almost whosoever is present every weekend. Okay, we'll start then. So we discussed this corporate strategy last weekend. I think we did till this slide 13. We'll start with slide 14 in this class. So the next model that we need to understand is Porter five forces model. So this model is of course been coined by Michael Porter, and that's why it's called as Porter five forces model. But what this model does, this model helps you to evaluate the external and the internal environment on these 5 parameters. So one is threat of new entrant. When you say threat of new entrant, is a potential new market player coming in from a competition perspective. So that's threat of new entrant. And then you have a threat of substitute product. So of course, if you have a higher threat of new product, new entrant, so new player coming in, of course that in turn will link it to the threat of substitute product, but a new entrant coming in, of course, will bring in the similar competing products, and hence the threat of substitute product goes on. What do you mean substitute products? Substitute products are those products which can be used interchangeably or which can be similar product can give you a similar satisfaction, level of satisfaction. That's called a substitute products. Then on the other side, you have your buyers and you have your suppliers on the other side. So bargaining powers of buyers and bargaining powers of suppliers. So let's understand this. So if your threat of competition is high, which means that the probability of new entrant coming in your industry or business is high, then of course the threat of substitute will be high. Any doubt till this point? And then if both of these are high, the rivalry among the existing players will be high. So there will be an aggressive competition in this segment. Sir, what you're trying to say here is if entry of these substitutes or the production of these substitutes goes or increase amongst themselves, then the competition will increase. Of course, because if these substitute products are more, what do you mean? What these substitute products will do? The substitute products will try and eat away your market share, correct? So let's assume if you and me are the same, are manufactured into the same industry for the same product, and we both produce substitute products to each other. So my product will try and eat away your market share, and you will try and eat away my market share. So that's why we will compete. There would be more aggressive competition between both of us, correct? Case 2, if your product is not a substitute to my product, and we both know that your product is not a substitute to my product, and you know that my product is not substitute to your product, we will not fight among ourselves. We know our markets are different, our customer segments are different, our products are different.
So the level of competition between us, that the existing rivalry between us would be relatively on the lower side. That's what sorry. Yeah, that's what this vertical line is trying to explain. This vertical line from top to down. Avesh, is that clear before I move to the horizontal? Yes, sir. Yes, sir. So then you have bargaining powers of suppliers and buyers. So, for example, you have bargaining powers of buyers. Now, if there is high competition, which means the number of sellers are high. Okay? If the number of sellers are high, or if the competition between sellers are high, let's take an example of Flipkart, Amazon, these e-commerce setups. There's a very high level of competition between these players, correct? Yes, sir. So what it does, it gives a bargaining power to the customers. So the bargaining powers of the customers also goes up. If there's a high competition, the bargaining power of the customer goes up. Is this point clear? Yes, sir. That's very natural. Similarly, if the level of competition among the players is on the lower side, then of course the bargaining power of the customer is on the lower side, because each player will not try and run behind the customer. It would be the other side. It would be the vice versa. The customer will try and run behind the seller. Is that clear? सर ये सेल वाला दोबारा समझा दो, मतलब क्या समझ? अगर सेलर्स के बीच में कंपटीशन नहीं है, so let's assume मैं और तू एक प्रोडक्ट बनाते हैं, so between you and me the competition is less because we both are selling different products. And let's assume if some customer, let's assume Isha needs their product, so will Isha be running behind us if she needs her product, or we will be running behind Isha to sell our product? That's right, sir. सही बोला. Yes, yes. कौन सा सही बोला? मैं तो दोनों बोले. हाँ, मतलब सर, the customer will have to run after us. That's why the bargaining power of the customers will come down. Because yes, the customer is now will try and run behind. If it is vice versa, so let's assume if there's an aggressive competition between you and me, and let's assume the customer is already using your product now or your service. If I want customer to switch to my product or my service, I will agree to the most of the terms and conditions that probably customer will put back to me, and hence the bargaining power of customer goes up. Example is, Indian telecom sector is a good example. If suppose you're with Airtel and you call Vodafone or Jio, saying that my current, sorry, if you are, let's assume if you are with Airtel and you put up a request to Airtel that you want to disconnect or you want to close your relationship with Airtel because you're moving to, let's assume, Jio or let's assume some other player, and the reason is that they are able to give you a better deal, then most of the time I've seen that they try and come back to you saying, sir, ये discount है, हम आपको data इतना ज़्यादा देते हैं, हम आपको call ज़्यादा देते हैं. They'll try and accommodate if possible. That's exactly the bargaining power of the buyer that we're talking about, because there's so much of aggressive competition that the players do not want their customer to go to the next player. So, but what you are right at your part. What I have seen now these days, these players are also very smart. ये लोग जो plans निकालते हैं ना, वो almost same plan निकाल रहे हैं. जैसे Airtel, Vodafone, 399, 399.
जियो भी उनके बराबर का ही है, so that customer will have no choice. हाँ नहीं, वो स्मार्टनेस नहीं निकाल रहे, वो इसलिए निकाल रहे कि उनके पास चॉइस नहीं है. So let's assume if Jio, let's assume, comes out and say okay, the plan is for 350 rupees, ठीक है. So Airtel अगर 399 का रखेगा और वो Jio 350 पे लेके आता है, so what will happen? Everybody will start switching to Jio, ठीक है. And then what Airtel has to do, Airtel has to come out with the plan equal to 350, or then Airtel will say okay, I will offer at 300. अगर एयरटेल 300 पे करेगा तो तुम्हें लगता है जियो will stop at 350? वो जियो will come and say okay, I will offer at 200. Then there will be a price wars, and the price war will continue till the time everybody agrees at that price कि इस प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए. और अब ये 399 वही लेवल है. तो rather than smartness, what I will tell you, it is a situation where they have no choice but they have to do this. Reliance or Jio has already done more than that, where they were giving free connections for I think close to a year or so, and that was the period where everybody, the other players in the market, were struggling, because if they were giving free services for that duration, then it's practically impossible for other players to retain the customer. Most of the customers, so most of these players lost their customers during that period. Sir, the biggest example is Vodafone Idea merger. The biggest example. मतलब they couldn't survive the pandemic and the competition. Of course. मतलब they are giving the name of pandemic कि हम लोग pandemic की वजह से we lost so much, but the actual reason is they lost their database to Jio already. I think from telecom sector, so अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेलीकॉम सेक्टर को तो पेंडेमिक की वजह से is positive in my view, because especially this mobile data and the internet side. So if you look at during the pandemic, I was looking at one of the article last week, and that article says that average consumption of mobile data or internet has significantly gone up. It says on an average per household, and this article says when you say per household, we're looking at the middle income class. We're not looking at some higher income segment. The usage of the internet, mobile data, has increased from 3 to 5 times vis-a-vis what it used to be prior to pandemic. Correct. So, for example, the kids are conducting their classes through are conducting their online classes. The old people who used to go out before pandemic for their entertainment or for their interaction, for their social life, वो सब बंद हुआ. ठीक है. आप मूवी थिएटर्स जाते थे, or you used to go to hang out with your friends for relaxation, but वो सब धीरे धीरे बंद हुआ. And now what do? You spend most of the time, you look at your these entertainment movies through these online platforms. So which in turn means offices, correct? So significant. So for example, अगर पहले pandemic से पहले मैं office में I need to speak to 10 people जो मेरे ही floor पे बैठते हैं, so I used to speak to them in person, correct? Now vis-a-vis in pandemic or after pandemic, the situation is I need to call them, correct? To call them could be an internet or voice call. Okay? Either of these will be increase of the business for telecom. So my view is that the pandemic has not created a negative for the telecom from a volume perspective. Of course, from a infrastructure perspective, because अगर उनका एक आउटलेट है तो उस आउटलेट को कोई आ नहीं रहा, तो उसका जो रेंटल्स है वो चैलेंज है. From business perspective, it's not like multiplexes business जो पूरा बंद हो गया. टेलीकॉम को तो बूस्ट ही मिला था. So I agree with you. It's not what they are saying. I think it's more than that. And NGO is one of the primary reasons which destroyed the market today. Sir, बिल्कुल you are right कि just because of pandemic this is one of the industries which has gained the momentum. But sir, इसके अलावा there were news in the market कि
almost 14,000 crore rupees of license fees or something was pending on Vodafone itself. अगर आपने सुना हो 3 महीने पहले न्यूज आई थी, तो ट्राई ने उनको मतलब इसके ऊपर बहुत इनकी मतलब कोर्ट सेशन वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ था. तो देयर वर लॉट ऑफ रीजन सर, मतलब बहुत सारे रीजन है जो वोडाफोन आइडिया का मतलब मर्जर में वी कैन काउंट ऑन. This license fee has nothing to do with the pandemic. This license fee is an accumulated fees outstanding which they have not paid prior to. हाँ जी. यस सर बिल्कुल. ये accumulate हो कितनी हो गई थी सर? Exactly. जबकि इनको बहुत रिबेट भी मिला इसमें, बहुत ज्यादा. So this is to do primarily do with the Vodafone ने जो हज को acquire किया था, उस पे कुछ taxation fees थी जो debate चल रहा था. And then court gave some orders more on a challenge here. So this has nothing to do with pandemic fees. Okay. So Exactly, sir. So I don't, as I said earlier, so it is not in my view. Again, I'm not party to Vodafone idea of a transaction, but my view as an analyst is this is less to do with the pandemic and more to do with the dent that has been created in the market by Jio. Especially during that phase where Reliance was or the Jio was giving this almost at free. Almost at free क्या मैं था तो free ही दे रहा था I think for close to 6 months of a year आप उससे मिलो और आपको free है now. People most of the people have continued their connection from there on. So if they've opted for that free connection and now Reliance or Jio has started charging them. So the charge which Jio is price that Jio is charging is also not more than what the other players are charging. Is either equal or little less. So which means I as a customer still have no motivation to switch off Jio and to move to any of these other players. So which means तब मैं फ्री यूज किया और अब भी मैं यूज कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स पैसे देंगे, बट ये पैसे एनीवेज चार्ज दैट आई एम पेइंग इज नॉट मोर देन व्हाट other people are charging in the market. So that's the strategy that Reliance has done, and that's what created a dent in the market share for these people. Correct, sir. Now, in terms of the bargaining powers of suppliers, so हमने customers discuss किया. So bargaining powers of suppliers. So again, if the number of suppliers are very high, ठीक है, बहुत सारे suppliers हैं और सब suppliers एक ही product बेच रहे हैं, ठीक है, कोई differentiation नहीं है, तो आपको bargaining power of the suppliers will go down. Bargaining power of suppliers will go down. But if there are limited number of suppliers and each supplier is selling a product which is very different or unique, then of course each of these suppliers will have their bargaining power, and the bargaining power of these suppliers will be on the higher side. And this in turn decides this horizontal level of competition. And this is what it calls a 5 forces model. You're trying to evaluate the level of competition basis these 5 parameters: the threat of new entrants, the threat of substitute products, the bargaining powers of suppliers and buyers. And these 4 is what in turn contributes or decide the level of rivalry between the existing players. Any questions or doubt on this slide? नो सर बट ये जो 2 पॉइंट्स हैं एक बारी ये दोबारा बता दीजिए जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं सर. This horizontal is the bargaining powers of customers, as we discussed, that if there is very high competition in the market, then each competitor try and eat away the market. So give me a second.
Yeah, sorry. So if the competition is very high in the players, the sellers, then each of the competitor is trying to convince the customer to come to their product or service, correct? So what it turn does, it in turn it gives a bargaining power to the customer. Customer demand करना शुरू करता है, मुझे ये प्राइस चाहिए, मुझे ये सर्विसेज चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ही मैं आपके पास आऊंगा या आपका प्रोडक्ट यूज करूंगा. So that's what it calls the bargaining power of the customers goes up. अगर कंपटीशन ज्यादा है और जब बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ऊपर है तो जो वो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है. Got it, sir. मतलब इसका yes sir, got it. Main इसका जो है 5 quarters का sir, the main gist is that the entrance of new substitutes or the entrance of new competitors derives the whole market. I mean, to some extent, because it in turns increases the bargaining power of customers and decreases it, and so on the suppliers businesses gets affected. Yeah. ठीक है सर. And the slide is explaining the same point. So, for example, let's look at the threat of entry. In the previous slide, we discussed that if the threat of entry is high, but that what does it high means and how does it high or low get decided? So this slide explains that. So yes, there are a lot of points. So, for example, capital requirement. So, if I have to start a business and that business requires huge capital, then will it be easy for me to enter into that business, or will it be difficult for me to enter into that business if the capital requirement is on the higher side? Difficult. Exactly, and that is what the capital requirement indirectly decides the threat of entry. Let's take an example. For example, steel business, car manufacturing business. These are some of the business which is very, very capital intensive. अगर कल मुझे Maruti से compete करना है, can I set up a company which will start manufacturing cars similar to Maruti? The answer is no, correct? It's not easy to enter in that market because for me to enter into that business it requires a huge capital. ये मारुति को भी पता है कि किसी को भी कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो उसको पता है एंट्री करना इतना आसान नहीं है, hence the threat of entry is on the lower side. Vis-a-vis, if I have to start a confectionery shop, normally like मुझे confectionery or grocery shop खोलनी है, I can take a place on the rent and can start with some investment of let's say 1 lakh or probably a little less than that. I can start that, correct? And that's where the competition is so high that everybody can start a confectionery shop. The capital requirement is very much on the lower side. ये समझ आया first point? The capital requirement कैसे threat of entry को decide करता है? Yes, sir. Yes, sir. And second is economies of scale. So, so for example, like newspaper, printing press. Okay. अब let's assume मुझे printing press खोलना है, I want to start offering a newspaper like Times of India, Navbharat Times, like these. It's possible कि मैं उसमें capital लगा के start कर दूँ, but for a newspaper, for a business like newspaper or printing press, for that business to operate and survive, what you need is economies of scale. अगर मैं एक कॉपी प्रोड्यूस करूंगा न्यूज़पेपर की, मेरा एक कस्टमर होगा, तो वो कॉपी प्रॉब्ली few lakhs रुपीस की एक कॉपी आएगी. बट वो कॉपी को वो प्राइस ऑफ दैट वन सिंगल कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर को अगर मुझे few रुपीस में लेके आना है, 5 रुपीस 6 रुपीस ऐसे लेके आना है, तो मुझे लैक ऑफ कस्टमर्स होने चाहिए, तब जाके मेरी वो कॉपी का प्राइसिंग नीचे आएगा. सो विच मीन्स ऐसे बिजनेस जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज्यादा चाहिए, तो कोई भी नया प्लेयर एंटर कर नहीं पाता है, बिकॉज उसको पता है अगर मैं एंटर किया, इफ आई एंटर इनटू दैट बिजनेस,
I will not be able to achieve that market share which is already being there or which is already available to some of the other players, and hence difficult हो जाता है उसके लिए survive करना. So that's the reason why this again acts as one of deterrent for threat of entry. So which means अगर एक ऐसा business like confectionery shop, अगर मैंने छोटा सा restaurant है, correct? Restaurant business I start again I can run and survive a business with few hundred customers, correct? So वहां पे एंटर करना रिलेटिवली आसान होता है. इसलिए अगर आप देखो इतने सारे रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ कस्टमर्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिलेटिवली लोअर साइड होता है. एनी डाउट इन सेकंड पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल? No, sir. Second, third is the cost advantage. If I'm able to produce something at a cost which other players can't do, okay? तो मैंने कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया 10 रुपए और अदर प्लेयर्स उसको 10 रुपीज पे नहीं 12 रुपीज पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. So it gives me cost advantage. अगर मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, so other player will also not easily enter क्योंकि उसको पता है the other player knows that there is already a player in the industry who's able to produce a product at 10 rupees, which is already lower than the cost that other players will incur. Hence, if I enter, I will not probably be able to win that battle, and hence it creates a deterrent for the others to enter into the market. Second, next is the product differentiation. If I have a product which is very unique, which is very different, उसके patents है, मेरे पास copyright है, तो दूसरे प्लेयर्स आसानी से उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, कॉपी नहीं कर पाएंगे, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, एंड हेंस एंट्री डिफिकल्ट हो जाती है. बट इफ I'm offering a product जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट, लाइक कन्फेक्शनरी बिजनेस का हमने बात किया, ग्रोसरी बिजनेस का हमने बात किया, इसमें कुछ नहीं है, करेक्ट? आप कोक बेच रहे हो, आप बिस्किट्स के पैकेट रखा हुआ है आपकी शॉप पे, ब्रिटानिया के, सो एवरीबडी इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, करेक्ट? देयर इज नो डिफरेंशिएशन, नो यूनिक piece to this, so it becomes very easy for you to open that. Next is the access to distribution channel. For example, जैसे हमने license की बात करी, so try के license चाहिए या distribution channel की जरूरत है. अगर आपके पास वो distribution channel है तो आप business में enter कर सकते हो. But if you do not have access to that distribution channel and you need that, for example, milk business, no. Newspaper business is again one of those business, correct? So banking business, sir. ठीक है, banking business, but banking business में इतना distribution channel इतना important नहीं है, especially in the current environment where everything is a digital base. I don't need to reach out to my customers, correct? But like a business like milk, ठीक है, अब milk एक ऐसा business है जिसमें is a perishable product, correct? So let's assume if अगर morning में आज milk pack हुआ है, तो probably within few hours it needs to reach out to their customers, correct? Throughout India, throughout different states. Just trying to understand उनका logistic या उनका distribution network कितना strong होना पड़ेगा to ensure कि वो जो milk है before the quality of the milk starts deteriorating, it's get delivered to different places at different shops or customers or their places or whatever. It gets delivered exactly in the way what the customer wants, correct? So the product like this Amazon product, the Amazon business, this grocery delivery e-commerce business, big basket, Amazon, these are some of the products segments which requires a huge access to a distribution channel, otherwise you operate nahi kar payenge. Then you have government barriers, licensing की हमने बात की, banking is one of those. हाँ sir, banking will fall into this, yes. Banking अगर आपको enter करना है, you want to open a bank, you need a license from RBI. So again, this acts as one of the parameter which decide whether it's easy for you to enter into that business or not. Retaliation by established products. So if you recollect, in India when these e-commerce players were coming in India, there were a lot of retaliation from existing individual retailers because shopkeepers, because उनको तभी डर था कि ये business eat away कर जाएंगे, and of course किया भी है. So in the current environment, especially in the pandemic, a lot of people try and use these online platforms to deliver or to order a lot of products. These are going to a grocery shop.
in person and buying the products from them. So of course it has its own advantages and disadvantages, but I mean that's where the customer picks and chooses where he or she wants. But of course it has impacted their business. Okay. So any doubt on this threat of entry? Explain each of these points. Any doubt, questions on this threat of entry? No sir, ऐसा तो कोई डाउट मतलब है नहीं अभी. Okay. So this in turn, this threat of entry in turn decides the threat of substitutes. As I discussed earlier, अगर threat of entry high है, so what does that mean? Threat of entry high means more players can easily enter into that industry. More sellers can enter into, more manufacturers can enter into that industry. If more players can enter, then in turn means what? वो players भी competitive product offer करेंगे. वो competitive product offer करेंगे तो क्या होगा? Substitution ज़्यादा हो जाएगा, and hence it creates a threat of substitution. Is that okay? And that's where Yes, the sir. relative price performance comes in. If you're selling a product at 10 rupees and your competitor also starts selling the same product or a similar product at 10 rupees, that competition will become very aggressive. सर एक डाउट है. हेलो Yeah, go ahead, Isha. सर अगर थ्रेट ऑफ एंट्री हाई होगी तो फिर उसमें प्लेयर्स एंटर कैसे कर सकते हैं, मतलब ज्यादा लाइक फिर तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी ना. Rate of entry high है. Rate of entry एंट्री high का डर हाई है कि वो घुस जाएंगे. एंट्री का डर किसके लिए हाई है? सर ये ना कंफ्यूजिंग है थोड़ा. हाँ, ठीक I है know. ठीक है सर. Let's say I'm an existing player और ईशा आप इंडस्ट्री में नहीं हो, मैं और भावेश इंडस्ट्री में ऑलरेडी, तो हमारे लिए ये डर है कि ईशा या कोई और प्लेयर आसानी से इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है, क्योंकि ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं चाहिए, कोई कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, सब सिमिलर प्रोडक्ट है, इजी प्रोडक्ट है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है आप. तो ये हमारे लिए थ्रेट है ना, आपके लिए नहीं. आपके लिए आसान है, आपको मेरे साइड से देखना है, एग्जिस्टिंग प्लेयर साइड से देखना. ये सर आप सही बोल रहे हो, बट ये हाँ भावेश. हाँ सर मैं बोल रहा था थ्रेट ऑफ एंट्री का डिफिकल्टी या फिर मतलब कोई और वर्ड यूज होता ना तो ये क्लियर हो जाता. थ्रेट ऑफ एंट्री इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. ऐसा लगता है कि मतलब इट व्हाट इट एक्चुअली मींस इज के एंट्री होने का डर है, बट थ्रेट ऑफ एंट्री मतलब वही बोलना चाह रहे हैं, एंट्री होने का डर है, वही बोलना चाह रहे हैं. बिकॉज दिस इज फ्रॉम दी, आप लोग देख रहे हो न्यू प्लेयर के साइड से, न्यू प्लेयर के साइड से एनालिसिस देंगे. ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है इंडस्ट्री के अंदर, ये उसके साइड से एनालिसिस, तो उसके लिए तो डर ही है ना कोई नया प्लेयर ना अंदर आ जाए. एग्जैक्टली. तो लेट्स अज्यूम आपका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, ठीक है, मेरा भी एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, हम दोनों का सेम ही लेन पे दो रेस्टोरेंट है, वी बोथ ऑफर लेट्स नॉर्थ इंडियन फूड. अब आपको और मुझको क्या डर है कि एक और नया कोई आकर रेस्टोरेंट बिजनेस ना स्टार्ट कर दे उसी सेम लेन पे. एग्जैक्टली सर. तो हम लोग के लिए तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ही हुआ ना. यस सर, उस पर्सपेक्टिव से सही कह रहे हो आप. उस पर्सपेक्टिव से ही है, ये एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साइड से है. ईशा, इज दैट क्लियर? यस सर. तो सर ये हमें टोटल एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के हिसाब से देखना है जो ये मॉडल है. ओके. सर ये दो पॉइंट जो है इसके, ये मतलब अभी डिस्कस करेंगे ना, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं. हाँ, सो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में जैसे मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, रिलेटिव प्राइस और परफॉर्मेंस. सो लेट्स अज्यूम मेरा एक प्रोडक्ट है और भावेश आल्सो हैज अ सिमिलर प्रोडक्ट. इफ भावेश प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बहुत खराब है मेरे प्रोडक्ट से, तो विल आई नीड टू वरी टू मच? विल दैट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर मी? मेरे कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं बिकॉज वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मेरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बहुत खराब है.
या उसका प्राइस बहुत अलग है, तो that is what it says. If the price and performance is very similar, then it becomes a threat of substitute. Yes, sir. सही कहा. Next is buyer propensity to substitute. What is buyer propensity to substitute? Buyer का intention क्या है? Let's assume जैसे Amazon or Flipkart. If you want to order a particular product, I think almost everyone will compare the product का price on Flipkart और Amazon. और उसको जहां पे भी बेस्ट प्राइस मिल रहा होगा वो वहां पे ऑर्डर कर. We're not loyal, right? We're loyal in the sense we do not try and give the difference. Okay, Amazon 10 rupees extra charge कर रहा है तो ठीक है, let me if both is delivering the product in let's say in 2 days and there's only a difference of 5 rupees, you still try and go in that towards that. That is called a buyer propensity to substitute. क्योंकि आपको पता है कि वो जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा वो सेम ब्रांड का प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, सेम फीचर है. There is no differentiation. Why should you pay 5 rupees extra? So you do not have any propensity to go towards a manufacturer who is giving you better service. But you go to restaurant business. Assume you've been in a restaurant and वहाँ का फूड आपको सर्विस अच्छा लगा और वो रेस्टोरेंट आपको 5 rupees extra चार्ज कर रहा है vis-a-vis the other restaurant. You don't mind probably paying is 5 rupees extra for that one meal because उस बिजनेस में आपकी प्रोपेंसिटी है यार मैंने फूड ट्राई किया हुआ है, let me not try and get to a different restaurant because if I want to eat the same food which I have liked earlier, I will not try and experiment. So that's where the propensity to substitute comes in. So any questions on these 2 points for threat of substitutes? No, sir. So like ये जो first point है buyer's propensity to substitute. सर इसमें अगर प्राइस ज्यादा भी होगा तो भी कस्टमर जाएगा इन केस अगर उसको बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा हो तो भी. ओके. Then you have buyer's power. कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कैसे आती है? साइज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर्स. अगर एक कस्टमर बहुत छोटा क्वांटिटी खरीदता है अपने किसी सेलर से, so if you're buying a very small quantity, suppose you go to vegetable buyer and say 1 kg tomatoes vis-a-vis 20 kg tomatoes, which of these transactions will give you higher bargaining power? Obviously, the larger quantity. So that's what the size. ठीक है. Similarly, concentrate. अगर एक मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं तो सेलर बायर की सुनता नहीं है and the buyer does not have a bargaining power. If the number of buyers is very less, if the number of buyers is very small, then the bargaining power of the customer goes up. Yeah. Buyer switching cost. What is switching cost? आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हो तो आपको कितना कॉस्टली होता है? Is it easy to switch or is it difficult to switch? So, for example, let's assume you are driving a Maruti car. आपने एक Maruti car purchase किया और आपको it's been 2 years you've been driving Maruti. Now there's a new car, suppose from Honda. You buy a Honda car और आपको 2 cars की जरूरत नहीं है घर में. Which means if you decide to buy a new Honda car, you will sell off the old Maruti car and then you will move to the new car. Is it less costly? The answer is no. You need to put a significant cost, right? क्योंकि वो
पुरानी कार का इंश्योरेंस चार्जेस होंगे, पुरानी कार पे आपने रोड टैक्सेस पे किए होंगे, तो आपको ये सब चार्जेस दोबारा लग जाएंगे, करेक्ट, वेस्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको दोबारा नई कार पे देनी पड़ेगी, सब लाइक आपको पुरानी कार सेल ऑफ करोगे, डेप्रिशिएट होकर सेल ऑफ होगी। यानी एक कार से जब आप दूसरी कार पे स्विच करते हो तो इजी नहीं होता, वो कॉस्टली होता है। वीज अवे दैट्स इफ आई परचेज अ बॉटल ऑफ कोक, 20 रुपीज का बॉटल ऑफ कोक, मैंने I drank half bottle and then I decided I don't want to have Coke, I want to have Pepsi now. So अब मुझे क्या कॉस्ट लगेगा, मुझे सिर्फ वो जो 20 रुपीज का मैंने बॉटल खरीदा है उसमें से मैं हाफ कंज्यूम कर चुका हूँ, and 10 rupees is what I will lose, right, if I switch to the next to the different product. So this is called a switching cost, कि जब आप एक प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं वो कितना खर्चा होता है। ये स्विचिंग कॉस्ट जितनी कम होती है, switching cost, lower the switching cost, higher is the bargaining power of the customer. Any doubt? No, sir. Then you have buyer's information. I think this is self-explanatory. Buyer के पास जितनी ज़्यादा information होगी प्रोडक्ट के बारे में, उतनी ज़्यादा उसकी bargaining power बढ़ जाती है. If you know the quality of the product, if you know the features of the product, if you know the feedback from other customers, so your bargaining power goes up. That's what exactly happens in an online business. An online business, a lot of customers try and give their feedback, and which makes the buyer aware of what's good and bad, and that's what creates bargaining power for the customer. Last is backward integration. उसमें दो चीज है, अगर आपने हाउस होल्ड भी दिया ना तो आपको 3-4 लाख दे रहा हो। So what is backward integration? So yeah, backward integration is so let's assume if so backward integration is, let's assume Maruti today purchased tires from MRF. Okay. Now, rather than purchasing tires from MRF, Maruti खुद ही tires का manufacturing start कर दे. If Maruti himself starts producing tires, then that is called as backward integration. So where do buyers coming to picture in this? Buyer ही है ना, Maruti tires जब खरीदता तो Maruti buyer नहीं है. Oh, okay, ठीक है. तो Maruti, instead of buying tires from MRF, start producing, तो वो backward integration हो, supply chain में extra पीछे आ गया ना. Yes, sir. Okay, so let's assume अगर MRF को ये पता है that Maruti has an ability to start manufacturing tires in the future, तो किसकी bargaining power ज़्यादा होगी, मारुति की MRF की? So Maruti, of course. फीस अगर MRF को ये पता है कभी भी टायर्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, बिकॉज MRF के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मारुति के पास नहीं आ सकती कभी भी, then the bargaining power of the Maruti will go down and bargaining power of MRF will go up. समझ आया? बिल्कुल सर. यही पॉइंट है जिससे बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स आते हैं, और इसी पॉइंट से बार्गेनिंग पावर सप्लायर आता है. सेम पॉइंट्स व्हाट डिसाइड्स बार्गेनिंग पावर. जैसे अभी हमने किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकता है तो मारुति का बार्गेनिंग पावर आ गया. मारुति इन दिस एग्जांपल इज अ बायर. अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, so we said that bargaining power of the MRF will be of the highest, right? And in this case the MRF is what? Seller, supplier. So some of the other points are product differentiation. I think we discussed this. If all sellers in the market are selling same product, no differentiation.
देन किसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है, कस्टमर का कि सेलर का? सर एक बार दोबारा पूछना, if all the If there are 20 players on the market and every 20 Okay. player seller is selling the same product, no differentiation, then customers will have a bargaining power or the supplier will have bargaining power. So customers. सर कोई भी नहीं. कस्टमर्स का बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगा ना अगर सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं. ओके ओके, यस सर, 20 सप्लायर है तो यस सर, दैट्स राइट. और अगर सब अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर जो है कस्टमर का कम हो जाता है, बिकॉज कम हो जाएगा सर, प्रोडक्ट यस. चाहिए तो वो उसी सेलर के पास जाना पड़ेगा. Is that clear? For example, restaurant. Yes, sir. एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है जिसका टेस्ट या एम्बियंस बहुत अच्छा है, ठीक है, और कोई भी रेस्टोरेंट जो उस एरिया में है उसको मैच नहीं कर पाता, तो वो रेस्टोरेंट अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को ऊपर ले जाता है. एंड स्टिल कस्टमर्स गो टू द रेस्टोरेंट एंड से यार प्रोडक्ट है बट क्वालिटी अच्छा है, फिर फूड का टेस्ट अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई यू पे प्राइस. वहां पे बार्गेनिंग पावर कस्टमर की नहीं है, बार्गेनिंग पावर उसकी है, सप्लायर की. इनफैक्ट कस्टमर्स वेट outside the restaurant. Pandemic से पहले की बात कर रहा हूं, of course things have changed, significantly changed in the current environment. Just keeping pandemic aside. So for those restaurant, people used to wait during lunch hours or during dinners time. Used to wait outside the restaurant for their turn to get in. ठीक है, वो क्या है, उसकी बार्गेनिंग पावर है. बट इफ यू गो टू सम अदर रेस्टोरेंट जहाँ पे ऑर्डिनरी फूड है, वो बोले आपको 15 मिनट आधा घंटा वेट करने और छोड़ या कहीं और चलते सेम फूड मिलता है. You don't wait for that, correct? You don't have the bargaining, but if you go to some of the restaurants, you need to wait, correct? So that's what the bargaining power means. So देख लीजिए अभी स्लाइड पे कोई डाउट है, क्वेरी है. So I've summarized this entire slide, all the 5. Sorry, this middle point. So अगर Yes, sir, threat of entry ज्यादा है तो threat of substitute ज्यादा होगा, और उसकी वजह से बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, सेलर का कम होगा, और हेंस इंडस्ट्री में राइवलरी ज्यादा हो जाएगी, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा. That's the way you need to understand the first middle point. Any questions out of this slide? सर सर आई अंडरस्टैंड ये चारों की वजह से द सेंटर पॉइंट इंडस्ट्री राइवलरी विल गेट इफेक्टेड, बट सर इसके अंदर जो सब पॉइंट्स दे रखे हैं, कंसंट्रेशन एंड डाइवर्सिटी, कैन यू जस्ट से वन लाइंस ऑन दैट कि मतलब. हाँ, वो सेम ही है जो मैंने बताया. सो लिखो कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स. अगर एक मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर्स कम है, तो किस कंपटीशन ज्यादा होगा, तो सेलर्स का कंपटीशन कम हो जाएगा ना, बिकॉज नंबर ऑफ सेलर्स आर ऑन द लोअर साइड. कंसंट्रेशन मींस कितने लोग हैं वहां पे. ओके ठीक है सर. बहुत सारे सेलर्स हैं और सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, इतने सारे सेलर्स हैं और सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो राइवलरी ज्यादा होगी कम होगी? सर सेम प्रोडक्ट में राइवलरी ज्यादा हो जाएगी, बस वही चीज है. सिमिलरली बहुत सारे सेलर्स हैं और सबके पास एक्सेस कैपेसिटी है. ओके, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब समझते हैं, यानी एवरीबडी इज प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, बट उनकी जो अभी सेल्स हो रही है वो सिर्फ 40 यूनिट्स होती है, तो 60 यूनिट्स उनकी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ेगा. जब आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होती है तो आप क्या करते हो, आप डिस्काउंट पे बेचने की कोशिश करते हो. यस सर. और जब आप डिस्काउंट पे एक जना बेचेगा तो क्या होगा, प्राइस वॉर्स होते हैं, कंपटीशन और एग्रेसिव हो जाता है. ओके सर. एग्जाम्पल देता हूँ सर. सपोज जैसे ये जो आपका मूवीज बिजनेस है, ठीक है, ये पूरे पेंडेमिक में क्या हुआ है, देयर इज सो मेनी मूवीज जो रिलीज होने के लिए रेडी थी, बट लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस आया, उसके बाद अनलॉक आया, फिर भी मूवीज जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, थिएटर्स हैं, either they are not allowed to open, or if they are allowed to open, the customers are not willing to go there easily, or if they are willing to go, they are not willing to go in that same size जो पहले जाते थे, करेक्ट. नाउ तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लेट्स अज्यूम अगर आप एक मूवीज बिजनेस है, आप प्रोड्यूसर, आई डोंट नो आपको कितना पता है मूवीज बिजनेस कैसे वर्क करता है, बट विदाउट गेटिंग इनटू दैट, जो लोगों को पता है, सो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो मूवी के,
सो जस्ट इमेजिन आपने इंडिया में मार्च में आई थिंक ऑफिशियल लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुई थी, इफ आई रिकलेक्ट करेक्टली. सो आपने एक मूवी प्रोड्यूस करा जो अप्रैल में रिलीज होने वाला था. इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन दैट मूवी. आप वो मूवी को अप्रैल से दिसंबर करेक्ट, आप उसको 7 months 8 months होल्ड करके बैठे हो. जब तक वो मूवीज को आप रिलीज नहीं करोगे, आप उस पर रिटर्न नहीं कमा सकते, उस पर जो रेवेन्यू आना है, तो आप 8 से 9 महीने जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा, पैसा लगा के रखा, वो अटक गया. आप एक नए प्रोजेक्ट पे नहीं जा सकते जब तक पैसा नहीं आएगा. पुराने प्रोजेक्ट से नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते. आपने अपनी पॉकेट से सब एक्टर एक्ट्रेस सबको दे दिया होगा पेमेंट. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब प्रॉब्लम क्या है? उसका बार्गेनिंग पावर नहीं है. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी प्राइम, ये जो 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 ऑनलाइन आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, वहां पे ये मूवीज रिलीज कर रहे हैं. और ये मूवीज कोई जूनियर एक्टर्स की नहीं है. सम ऑफ द बिग एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवी भी यहाँ पे ऑनलाइन रिलीज हो रही है. करेक्ट. सो what does it mean? This simply means कि वो उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो बैनर्स प्रोड्यूस करते हैं मूवीज, उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है. और एक बार ये लॉकडाउन या ये जो पेंडेमिक है शायद खत्म हो जाएगा, and if everything comes back to the normal, which I doubt, because it will take a lot of time even if the vaccine comes out, especially for India. But let's assume if everything, तब जाके जब if people start getting comfortable and start going to multiplexes again, then probably things will change, which I doubt, because I think even if this COVID goes away, things will not be the same the way it used to be before COVID. In a lot of industries, be it a restaurant business, be it as entertainment business, be it you work from home or office. So I think a lot of things permanently will change, even after the COVID. But okay, that's a separate discussion. So that's what it means when you say एक्सेस कैपेसिटी. अब आपके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आपने मूवीज प्रोड्यूस कर दी है, वो कैपेसिटी है, तो आपको मूवी ऑफलोड करनी है, तो आप कहीं पे भी ऑफलोड करने के लिए रेडी हो किसी भी प्राइस पे, बिकॉज अदरवाइज यू विल इनकर लॉसेस. सो that's the summary of the middle point, which is existing rivalry. हाँ जी, देख लीजिए स्लाइड, कुछ डाउट कुछ करके पूछिए. स्पेंड अ मिनट और सो ऑन दिस स्लाइड एंड लेट मी नो. Any questions, in doubt on this? Sir, exit barriers बता दीजिए एक बारी बस. Exit barriers. So let's say if you enter into any industry, and if that industry has exit barrier, what do you exit barriers? कि आपको उस इंडस्ट्री से अगर एग्जिट करना है, दो तरीके होते हैं, एक एंट्री बैरियर होता है, कि एग्जिट बैरियर होता है. एंट्री बैरियर is there a problem to enter the business, to start the business? An exit barrier is there a problem to shut down the business, if you want to exit from the business? So अगर आप एक इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, लेट्स से बैंकिंग एग्जाम्पल, बैंकिंग में इंडिया में एंट्री भी बैरियर है और एग्जिट भी बैरियर. अगर आपने एक इंडिया में स्टार्ट करो कि आपको बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत है, आपने बैंकिंग लाइसेंस लिया, बैंक स्टार्ट कर दिया, अब आपको 2 साल का तो बैंक बंद करना, तो आप एग्जिट नहीं कर सकते. आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, प्रोटोकॉल दैट यू नीड टू कंप्लीट, उसके बाद ही आप एग्जिट कर पाओ. तो एग्जिट करना भी इतना आसान नहीं है. आप ये नहीं, कल को आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आप जब मर्जी एग्जिट कर जाओ. तो विच मीन्स कि अगर एग्जिट बैरियर्स हैं तो लोग एंटर भी इतनी आसानी से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर हमने एंटर कर दिया तो एग्जिट नहीं कर पाएंगे. हेंस द कंपटीशन गोज डाउन. अगर एग्जिट बैरियर नहीं है, लाइक रेस्टोरेंट बिजनेस, आप कभी भी खोलो, 6 महीना चलाओ, नहीं चला तो बंद करके चले जाओ.
तो वो एग्जिट बैरियर्स नहीं है, तो इसलिए वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है. That's what it means. ओके एंड सर कॉस्ट कंडीशन तो वही होगा जो आपने बताया कि उसमें पैसा लगा दिया प्रोजेक्ट के ऊपर, जब तक मतलब जब तक पैसा रिकवर नहीं होगा तब तक नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाने, तो देयर आर कॉस्ट. इसका एग्जांपल दिया है. ओके सर. And any other doubt on this slide? नो सर. Okay. So these slides are the explanation of each of these points जो मैंने आपको बताया. So अगर आपको वो रीड करना हो तो आपके पास अवेलेबल है. So आप देख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको. And in case you still having doubt, I'm more than happy to take that in next class. So जैसे अभी हम लोग स्मार्टफोन को डिस्कस कर सकते हैं, या एनी अदर इंडस्ट्री अगर आप चाहिए तो ई कॉमर्स, एनी अदर इंडस्ट्री दैट यू वांट मी टू टेक दैट एज एग्जांपल एंड एक्सप्लेन दिस एज अ केस स्टडी, मोर देन हैप्पी. अदरवाइज आई कैन टेक स्मार्टफोन. क्या प्रेफरेंस सर किसी इंडस्ट्री का? ई कॉमर्स, सर ई कॉमर्स ही लेते हैं सर. ई कॉमर्स, चलो ठीक है, ई कॉमर्स. सो लेट्स से ई कॉमर्स इंडिया ई कॉमर्स इवैल्यूएट करते हैं, particularly in Amazon and Flipkart being into the top category. So let's start. So let's look at from a threat of entry. आपके हिसाब से अगर आप Amazon हो या आप Flipkart हो तो आपके लिए क्या है? Do you think threat of entry high है, low है इंडिया में e-commerce segment? Do you believe new players can enter in easily? No sir. No. My view is yes. ठीक है, आप हर एटलीस्ट ऑन अ डेली और वीकली बेसिस आप देखते कोई ना कोई नई ऐप आ जाती है, कोई ना कोई नया ई कॉमर्स में सम शेप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस खोल देता है. तो तुम नो क्यों बोलते हो? ओके सर, राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एंट्री, ओनली एंट्री पॉइंट. एंट्री की बात कर रहा हूँ. वो हाँ, चलेगा, तो नहीं चलेगा, वो अच्छा चलेगा, डोमेन ही बनाना है. हाँ, तो बस वही बोल रहा हूँ. हाँ जी, कितने सारे लोग आजकल, तो कितने सारे लोगों ने घर से ही पुराने प्रोडक्ट ऑफर. एग्जैक्टली सर. यस सर. आप ऐप लॉन्च करते हैं, वेबसाइट लॉन्च करा, वो ई कॉमर्स Amazon कॉम्पिटिटर बन जाता है ना. वेदर वो सक्सेसफुल होता है कि होता है वो बात की बात है, बट एंट्री तो कर जाता है ना, कंपटीशन तो क्रिएट कर देता है ना Amazon के लिए. करेक्ट सर. सो फॉर मी ई कॉमर्स एक वेबसाइट ही लिस्ट करनी है, दैट्स इट. हाँ, वेबसाइट और ऐप व्हाटएवर इट इज. हाँ जी. और अगर आपने देखा है लॉट ऑफ लोकल प्लेसेस में, अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाओगे, आप नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में जाओगे, टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहां पे आप देखो छोटे छोटे लोकल एप्स हैं जो ये बहुत एग्रेसिव कंपटीशन देते हैं Amazon को और Flipkart. Yes sir. Sir, let's take an example of just putting my point in. Sir, बैंगलोर में ना, जैसे यहाँ पे ओला उबर तो ऑल ओवर दिल्ली एंड इंडिया चलता है, ऐसी बैंगलोर में एक ऐप है सर, वो मतलब कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मतलब 2 व्हीलर्स पे अपना आपका बैग दे जाएंगे, एंड पता नहीं उस ऐप का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी सर. तो आपका बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर दे शिप योर प्रोडक्ट्स इंटर स्टेट, मतलब 50-60 रुपए में. सो बहुत छोटी छोटी एप्स है सर जिसके बारे में पता भी नहीं है. Right. So all these creates competition, and that's what we're discussing, threat of enter, because e-commerce business में enter करने के लिए आपको ज्यादा investment की जरूरत नहीं है. You only need an app or a website. Also now these people have started offering on WhatsApp also. So एक WhatsApp का नंबर दे देते हैं, और वो WhatsApp का नंबर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फ्रेंड सर्कल से और फ्रेंड सर्कल में चला गया, तो एक बहुत बड़े नेटवर्क में मेरा WhatsApp नंबर पहुंच गया. So and if anybody wants to order a product, वो मेरे WhatsApp पे मैसेज करेगा, मैं प्रोडक्ट के डिटेल्स भेजता हूँ, वो प्राइस करते हैं, एग्री करते हैं और हो जाता है. सो दैट्स आल्सो काइंड ऑफ एन ई-कॉमर्स एग्जांपल, करेक्ट, दैट यू ट्राइंग टू, जिसके पास इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो ऐप या वेबसाइट नहीं लॉन्च कर पाता. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग थ्रू द WhatsApp as well. Facebook market is one of the examples. Facebook market. Correct. Facebook से है, Instagram से है, Twitter से है. So all these are very different and very less costly. YouTube channels से कितना सारा है. So for example, people have created a lot of videos on YouTube, तो
वो वीडियोस की वजह से आपको लाइक्स मिलते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट यू get some base from a customer perspective and then you are able to market your product or service. ये सब easy to enter है. आपको YouTube चैनल लॉन्च करने के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं. You just go and create some credentials on YouTube and put a video and go. ठीक है. So e-commerce में threat of entry में कोई doubt? Do we agree No, that sir. threat of entry for India e-commerce segment is on the higher side? So we put this arrow. Now let's come to the threat of substitutes. तो अगर threat of entry high है, so of course threat of substitutes भी high हो जाएगा. Correct, sir. अब अगर threat of entry high है, threat of substitute high, तो जो rivalry है players की इंडस्ट्री की वो भी high हो जाएगी. Yes, sir. अगर competition बहुत ज्यादा है, तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा कि बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा? बायर का, सर. ये बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, ये बार्गेनिंग पावर हो गया. पोर्टर मॉडल ई कॉमर्स सेगमेंट. ओके. ओके. वी शुड बी ऐसा टेलीकॉम का बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा. टेलीकॉम का भी कर लेते हैं. सो लेट मी प्लॉट डिफरेंट कलर टू टेलीकॉम. रेड. सो मैं जो रेड से बना रहा हूँ वो टेलीकॉम है. सो टेलीकॉम में थ्रेट ऑफ एंट्री जो है वो लो है. लो है, सर. क्योंकि आपको एंटर करना इतना आसान नहीं है. इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर. आपको लाइसेंस की जरूरत होती है. इतना आसानी से आप एंटर नहीं कर सकते. ठीक है. अभी थ्रेट ऑफ एंट्री अगर लो है तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है वो आई विल से लो है कि नए प्लेयर्स नहीं आ रहे, बट जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनमें हाई है. एंड इस हाई की वजह, इतना हाई है, इसकी वजह से ये हाई हो गया. Okay, sir. This can work like this as well. तो इसकी वजह से जो बायर का बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा हो गया एंड सप्लायर का बार्गेनिंग लो हो गया. हाँ जी. So we've done two industries, telecom and e-commerce. कोई डाउट है तो बताइए, otherwise we move to the next. ऐसे स्मार्टफोन का भी एग्जांपल है, ज्वेलरी बिजनेस का एग्जांपल है. 2-3 एग्जांपल्स हैं स्लाइड्स में, तो वो तो आप देख लेना. So what we've done, couple of others. Yeah, Jaisha. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जो आपने कहा कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के बीच में हाई है, तो इस वजह से बार्गेनिंग पावर बायर्स इंक्रीज हुई और सप्लायर्स की. क्योंकि देखो नए प्लेयर्स नहीं आ रहे, ठीक है. सो नए प्लेयर्स नहीं आ रहे तो नया कंपटीशन नहीं आएगा, दैट इज वन पार्ट. बट जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो तो आपस में बहुत फाइट कर रहे हैं. इनफैक्ट उनको सरवाइव करना ही मुश्किल हो रहा है. तभी तो वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ. यस सर. वो कंपटीशन भी तो हमें देखना पड़ेगा ना. जब वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है और वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है ना. ओके. The good example of this is, आप आज से 5 साल पहले इंटरनेट के चार्जेस अगर आपको पता हो तो क्या थे, और अभी इंटरनेट के चार्जेस क्या है? प्राइस कम क्यों आया है? कंपटीशन की वजह से प्राइस कम आया ना. आज से 10 साल पहले जो वॉइस कॉलिंग के चार्जेस होते थे, आज वॉइस कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है. यस. So this is why, this is because of the huge competition. अब वो huge competition is not about the new players, it's about the existing players आपस में फाइट कर रहे हैं मार्केट शेयर के लिए. ओके सर. Any doubt on this slide? No, sir.
हिसाब किताब और कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं इनको, मतलब बेसिकली मार्केटिंग सेल्स प्रोडक्ट की पागल है वो टारगेट भी इसको आई थिंक इतना तो नहीं है। मैंने तो मैंने क्या बच्चा उसके दिमाग में कुछ फ्यूचर होता कि मुझे और भी रहना। So next is SWOT analysis. So we've done Porter model. Next is SWOT. SWOT is relatively easy, so I will not try and get into too much of this because आपने बहुत SWOT देखा है. ठीक है. The couple of things which I'll explain, which is important for you to understand is, so when you say SWOT, when we say strength, and we say opportunities, the difference between strength and opportunities is strengths are internal, which is within the business, and opportunities what is outside the business, external जो available है. For example, आपके पास एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आपके पास इंडस्ट्री में बेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ है क्योंकि आपके इंटरनल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. अपॉर्चुनिटी इज लेट्स अज्यूम पेंडेमिक आ गया एंड लेट्स अज्यूम आप ऑनलाइन डिलीवरी बिजनेस में, और पेंडेमिक आ गया तो आपको ऑनलाइन डिलीवरी बिजनेस बहुत अपॉर्चुनिटी है, वो एक्सटर्नल है, आप उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी. सिमिलरली वीकनेस इज आल्सो इंटरनल विद इन द बिजनेस एंड थ्रेट इज एक्सटर्नल. लाइक एक मल्टीप्लेक्स है, एक मल्टीप्लेक्स का जो सर्विस है या उसका जो क्वालिटी ऑफ मूवी एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है. दैट्स देयर वीकनेस है, उस मल्टीप्लेक्स की प्रॉब्लम है, वीकनेस है. बट ये जो पेंडेमिक की वजह से जो मल्टीप्लेक्स में प्रॉब्लम आई है वो थ्रेट है, वो एक्सटर्नल, उनके कंट्रोल में नहीं. सो इज दैट क्लियर व्हाट डू यू मीन इंटरनल एक्सटर्नल? Yes, sir. And that's what SWOT is. SWOT is strength, weakness, opportunities, and threat, where you're trying to understand and evaluate what are the different aspects of the particular industry or a company. So so I will explain the SWOT again through the example जो हमने किया, rather than going to theory part of it, because I think it's relatively easy है आप लोगों ने करा है. So जो भी हम Amazon का discuss कर रहे थे, e-commerce, let's continue with that. Let's do a SWOT for the Amazon. So I want you to tell me strengths according to you, based on your experience. जो भी आपने Amazon, and I think most of you would have in some shape and form would have used Amazon. So Amazon India की बात कर रहे हैं. So Amazon India की आपके हिसाब से क्या strengths हैं? हाँ जी, give me some points. Strengths for Amazon. So Amazon as a business or from a point of view of a customer? नहीं, आप from business, but वो एक ही बात है ना. अगर कस्टमर Okay, को so लगता sir, है वो strength है, वो बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ ही होगा ना, बिजनेस पर्सपेक्टिव से होता है ना. Sir, if we do not go by the point which are mentioned in slides, and then if we talk in a layman term, sir, big database is a strength which Amazon has. Correct. Yeah. Database, data, And or yes, sir. And if talk about from slides, so Amazon as a business, sir, they have a lot of like skilled and knowledgeable people as you know. We do not lack in terms of technology. Yes, sir. Technology is also very good. Experience, because Amazon US में बहुत बड़ा है. So when you come into India, so in they have already have probably captured or almost captured some of the very big markets. So there's somebody who knows how this business works. They know the intricacies of this. They have funding, capital बहुत बड़ा strength है. ठीक है. So Amazon India जब losses में था और अभी भी almost है. So they still able to fund their operations because उनको जो US operations है, some of the other countries operations है, वहां से funding आती है. So yeah, these are strengths. Let's look at opportunities. क्या opportunities है Amazon India के लिए? Sir, opportunities. Pandemic खुद में भी opportunity है. हाँ, exactly, sir. अपने आप में बहुत बड़ी opportunity है, सही बात है. ठीक है. And when you have one business running very well in terms of and then that is already in the eyes of customers, so the opportunity is to get into another businesses as well, like which has Amazon has already. Correct. Amazon different business में Amazon Prime आ गया है, and so
Exactly, sir. उनके segments ही, correct? So once they establish that relationship and they build the brand and they get the data, so it's very easy for them, and that's what the opportunity is, that they can use that same technology or data or network to some of the other business channels. Okay. Weakness. What is the weakness for Amazon in India? Weakness. Anji. Sir, yes, sir, please go ahead. Good. Sir, like old school thought people, I'm not pointing out at you or me in terms of newspaper reading and everything. But yes, sir, if we talk about my father and then my mother and then my grandparents, old school thought is that this online business is not good, and this might be a weakness for Amazon as well. That कि नहीं यार हमें शॉप पे जाना है. So getting into the life, sir, उनकी लाइफ में एक अपना इम्पैक्ट बनाना Amazon के लिए it's a weakness. थ्रेट है ना, वीकनेस है. वीकनेस तो इंटरनल होता है. Okay, yes sir, yes. अभी हमने डिस्कस किया ना, इंटरनल जो होगा, जो Amazon के कंट्रोल में है. अब चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ अ जनरेशन, वो Amazon के कंट्रोल में था ना, वो तो उसके लिए एक थ्रेट है. So maybe not having the proper human resource. But वो है प्रॉब्लम Amazon India में. I've never. Sir, I think no. My usage of Amazon में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि where I've seen significant problem with the मैंने इनफैक्ट जियो के लिए एक्सपीरियंस किया है. So Jio is always a short staff kind of a project or business. But my experience for Amazon is not like this. Isha, in case you experience that probably we can take that. No, sir, like maybe in the starting, like in the starting phase. अभी की बात करें, current position की बात. We're evaluating Amazon India as of today. Sir, पता नहीं, you might come with a new example because आपको ज़्यादा knowledge है. But as per me, sir, I think they have already come up with all their weaknesses. But अगर आपको कुछ पता है तो please share. Sir, it doesn't have much access to offline. Much offline? Like it only has access to online, like e-commerce. So तो वही बिजनेस मॉडल है ना उसका बिजनेस मॉडल वो ऑनलाइन का ही है ना. तो ऑफलाइन का डिस्कशन क्या कर रहा है अभी. इफ वी से कि मारुति जो है मारुति कार बनाता है बट बिल्डिंग नहीं बनाता, वो तो उसका बिजनेस ही है ना. बिल्डिंग नहीं बनाता, बिल्डिंग तो डीएलएफ का बिजनेस है. दैट इज नॉट अ वीकनेस. दैट इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी दैट ऑपरेट फॉर अ बिजनेस ए, नॉट फॉर द बिजनेस बी. Sir, I think Amazon की कोई weakness नहीं है. If we talk about like कुछ भी उठा लो आप, they are doing very well. And internally, sir, I have known like बहुत सारे लोग who are working with Amazon, and as far as staffing or employment is concerned, there is no issue. It's an internal matter. Their websites, applications, and everything is up to date. Market competition is up to date. Everything, matlab, internally they are managing all the things very well. So weakness निकालना बहुत, मतलब I don't know, sir. So a couple of weakness which in my view still exists for them is their presence in tier 2 and tier 3 cities in India. So if you look at some of the tier 2 cities and especially the rural part of those cities, I am aware that Amazon have no presence there. The product doesn't get delivered. They do not have the ability to deliver the product. That's the problem for them still now. They have only captured the markets in some of the metropolitan cities, because I think you guys also I think based out of or operate from metropolitan cities. So शायद आपने वो experience नहीं किया. But if you go to your Amazon app and you change the pin code and try and
put some pin codes of these tier 2 or tier 3 cities, you will see they will say, okay, product can't deliver on these places. So I think that's still a problem, because India, as we're looking at Amazon India, सर इंडिया ये अमेजोन की वीकनेस मतलब इंटरनली सर ये तो इंडिया का इशू है मतलब आई थिंक नॉट कटिंग डाउन योर पॉइंट बट सर इंडिया का इशू कैसे है? अमेजोन को जाके वहां पे प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। इंडिया का कैसे है? हमारे यहाँ टियर 2 टियर 3 के अंदर सर बाकी उसमें तो बाकी कंट्रीज में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये सिर्फ बेसिकली इंडिया के लिए हुआ। अरे बाकी कंट्रीज में भी प्रॉब्लम थी ही, अमेजोन ने धीरे धीरे वो ओवरकम किया, और जब तक ओवरकम नहीं करेगा तब तक तो प्रॉब्लम अमेजोन की है ना, इंडिया की थोड़ा प्रॉब्लम है। उन सिटीज में नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा है, वहां पे रोड थोड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम है, वहां सब कुछ अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इट इज फॉर अमेजोन टू गो एंड बिल्ड दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इफ दे वांट। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे ये सब चीजें लैक कर रही है ना, इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड यू नो इंटरनेट कनेक्शन एंड एवरीथिंग, तो इंडिया में सब चीजें लैक कर रही है टियर 3 सिटीज में। तो इसमें अमेजोन की वीकनेस की बात कर रहे हो, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? आज की तारीख में कौन सी टियर 3 सिटी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, और कौन सी टियर 3 सिटी में इंटरनेट नहीं है? आप कौन सी बात कर रहे हो? आजकल रूरल एरिया में इंटरनेट आ गया सर। हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैं तो रूरल एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अभी भी टियर 2 टियर 3 पे हो। आप बोल रहे हो टियर 2 टियर 3 सिटीज में, लाइक लखनऊ, लाइक सम ऑफ द रूरल पार्ट ऑफ लाइक बिहार, यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सबके पास स्मार्टफोन है वहां पे सर है मतलब सर रोड्स ले लो, रोड्स इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, डिलीवरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। इतना इशू नहीं है जितना जितना प्रॉब्लम है। और रोड कहाँ खराब नहीं है? दिल्ली में रोड खराब नहीं, मुंबई में रोड खराब नहीं है। तो वो मुझे नहीं लगता वो प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा जितनी ज्यादा। अच्छा ठीक, लेट मी पुट दिस वे, वहां पे ऑलरेडी लोकल प्लेयर्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस में, ई कॉमर्स में वर्क कर रहे हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं सर, वही तो मैं ओके आप कह रहे हो कि वो है सर, बट एज पर मी इस फ्लिपकार्ट कहाँ टियर 3 सिटी में जा रहा होगा सर, या जो अमेजोन नहीं कर पा रहा? मतलब ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं सर, आपका होगा, बट ठीक है, जैसे यू नो एज यू से। नहीं तो मैंने ये भी कहा कि फ्लिपकार्ट है, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला वहां पे लोकल प्लेयर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लुकिंग एट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट? सो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में एक्सेप्ट कपल ऑफ स्टेट्स, बैंगलोर एंड सम ऑफ द अदर डेवलप्ड स्टेट्स, आपको मिल जाएगा। बट अगर आप इसके अलावा स्टेट्स में डिलीवर करने की कोशिश करोगे, so Amazon still has to work more on this distribution network in terms of supply chain, in terms of logistics to get the product delivered in the same turnaround time जो वो बाकी सिटीज में कर पाता है। आपको ये समझने की कोशिश करनी कि Amazon कोई भी कैसे ग्रो करता है कंट्री में। So Amazon इंडिया में आया, कितने साल हो गए Amazon को आया? It's a relatively new entrant, right? It's been 5 to 6 years, or probably 8 years recently, right? So therefore the first objective is to build their base strong in some of the top tier 1 cities, correct? And that's what they've done. Delhi, Mumbai, some of the metropolitan cities, correct? Bangalore. So यहाँ पे उन्होंने base बनाया अपना strong, which they've done it. ठीक है, of course there are issues वो करेंगे, but I'm saying now immediately they've covered their, now the next growth for them would be, okay, let's look at the now tier 2 cities. Once they do that, then they will look at tier 3 cities, and that is will continue to be a weakness for them till the time they achieve that. So and Flipkart is also going through the same journey, correct? और तब जाके वहां के जो लोकल सप्लायर्स हैं, वहां के जो लोकल ई कॉमर्स बिजनेस है, तब उनको डैमेज होना शुरू होगा, तब उनको कंपटीशन मिलेगा अमेजोन से, जो अभी शायद नहीं मिल रहा है। बट आने वाले टाइम में अमेजोन की जो ग्रोथ होगी इंडिया में, वो यही तो ग्रोथ होगी। आपको क्या लगता है मेट्रोपॉलिटन में ग्रोथ होने वाली है? मेट्रोपॉलिटन में ग्रोथ तो स्टैग्नेंट हो जाएगी, बिकॉज एवरीबडी विल स्टार्ट, I think almost everybody is now using Amazon. So out of 100 people, let's say 100 people in a city like Delhi or Mumbai, out of 100 people, probably 70 people would be already using Amazon in some shape and form. So जो growth होगी 70 से 100 पे जाने वाला है। But when you're looking at tier 2 or tier 3 cities, वहाँ पे 100 में से 10 लोग अभी currently Amazon use कर पा रहे होंगे। So the growth would be exponential into tier 2 and tier 3 cities. That's what I meant when I say weakness.
this will come out when they will be looking at from an expansion perspective into tier 2, tier 3 cities. Because मुझे कम से कम एक warehouse तो open करना पड़ेगा ना उस tier 2 cities में, if not more. मुझे at least एक warehouse, एक supply chain setup तो बनाना पड़ेगा, which requires investment. करेक्ट, वो investment phase manner पे होता है. एक साथ तो आप इंडिया के हर स्टेट में वो warehouse नहीं बना पाओगे. ठीक है सर, I can understand your point. जो आप कहना चाह रहे हो. It's not only about the infrastructure or you know the Indian things. अब if we look out at from this point of view, तो आप सही कह रहे हो, ये Amazon का एक weakness है to reach out to tier 3 cities और वहाँ पे अपना business expand करना, क्योंकि tier 1 में it's already expanded and एक time के बाद जाके it will be like stagnant. So tier 2 and tier 3 will be their weaknesses now. जो tier 1 cities में I think one weakness which they have, I would say it has not eliminated 100%, but yes, they've worked significantly on that is the trust of the customer, right? Because I think in the past there have been cases, at least I have read in newspaper, I'm not sure kitne sach hai, kitne jhoot hai, but what I read is, so for example, if you're ordering a mobile phone, the mobile phone gets delivered to your place, but when you open it was not a mobile phone, it was dummy or stuff like this. So now it's very difficult to identify that was it a problem with Amazon or was it a problem with individual in Amazon who did some fraud and did something. But I think overall it creates a dent on the reputation of the branding of the Amazon. The trust goes away from the customer. So they've I think significantly worked on this, but yes, some pieces still there which needs to be sorted. Similarly, another issue which now this is something which is somewhere between weakness and threat is digital payments. It's a secured digital payments कि अभी अगर मुझे Amazon payment करनी है, are these secured or not? So again, I think वो भी एक issue है इंडिया में अभी भी, because lot of people, especially अगर high value transaction आपको करनी है, you're placing a big order and it's a large value transaction, then still there could be issues on the secured digital payments. So and it's not completely a weakness, it's a combination of weakness and a threat. The another threat which I can think of, threat external which I can think of, is the so lot of manufacturers have started coming out and selling their products on their website. So Amazon business will get impacted, correct? Because what Amazon is doing, Amazon is only providing a platform. कोई manufacturer तो करता नहीं है product. So for example, Samsung है, Apple है. Samsung और Apple का phone website Amazon अपने app पे या website पर display करता है and customer goes and purchase that. Okay, so which means they are providing a platform between a seller, which is Apple or Samsung, and a customer, which is you and me. उन दोनों के बीच में connectivity लेके आता है. So if Samsung and Apple comes out with their own website or app जिस पे आप order place कर सकते हो, it's a threat to Amazon. Exactly, sir. ये तो आपने बिल्कुल सही point बोला है कि people are now coming with their own मतलब websites. And then for me as a consumer, अगर आप Amazon से Apple का phone buy कर रहे हो, so why don't you go and buy that Apple का phone from Apple की website, which is Apple Inc. Now उनका online store इंडिया में है ही. Correct. So ये सब threats हैं Amazon के लिए. Again, the another threat, which I think obvious, is the competition like Flipkart. So Flipkart is again one of the next best competitor or the first best competitor for the Amazon, especially from an market perspective. So no, the other competitor, which is like Snapdeal, I think they are but not into that league no more.
but the Flipkart and some of the other players, especially Walmart, so there are a lot of potential possibilities that Walmart might come in and start doing something which could be damaging for Amazon. But again, those are guesses based on what we are reading in the news. But as of now, of course, Flipkart is one of the threat for them. So that's the sort for Amazon India. कोई doubt, question, कुछ है तो पूछे. Any point that anybody wants to add to this, please feel free to add. Sir, no point as such. Sir, Amazon business itself is very successful business. So उसके points निकालना मतलब it becomes relatively tough vis-a-vis other companies. नहीं ऐसा नहीं है. So the SWOT is not about whether business is successful or not. Even if a good successful business will still have some points in each of the category, and an unsuccessful business will also have some points in each of these categories. So what are we're not evaluating this from a success perspective. In fact, अगर एक ऐसा business है कुछ कोई weakness ही नहीं है, so then your analysis is wrong, which means because ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा ना बिजनेस में, कोई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ही नहीं. अगर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं तो वो बिजनेस ग्रो क्या करेगा? Growth will only come from when you take care of your weaknesses and you exploit your opportunities or strengths and you manage your threats. Then only you will grow as a business, correct? So don't be under the impression that a good business is the one who does not have weakness. I think that's more theoretical. But real world में ऐसा नहीं होता. Aviation देख लो, correct? Everybody believed that India में aviation business, this tourism business in India is one of those business which is a huge growth, correct? And kind of an economic growth that we've seen in India, especially from a modernization perspective, especially from a corporate movement and traffic movement perspective, right? This entire hotel and this aviation sector, the kind of growth that we've seen in number of flights, number of people moving in, be it travelers, be it corporate traffic movement, right? So, क्या हुआ? This pandemic has explored, correct? It created a problem for them. So it's a weakness, correct? Which was never realized earlier because शायद at least our generation have never seen this, what we're seeing now. So, but of course, now this has created something for a think tank of the aviation industry to think, हाँ ये possibilities future में हो सकती है. ठीक है, this is what also possible. So, how do you manage that show? Do you have an ability to manage that from a business perspective? Right, aviation and tourism is one of those business which almost not almost which 100% collapsed during this phase. तो ये evolving है. Sir, as you are rightly said, के SWOT के अंदर सर T वाला point तो हमेशा ही है. For every business, it will remain there. I mean, threats will always be there. Weaknesses one can overcome by time, but threats will be always be there. Like pandemic is a unknown threat. किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कभी, which came and then destroyed everything. So yes, sir, threats are always there. Right, and if you don't manage that threat, if you do not protect yourself against that threat, slowly the threat which is external will become internal and create a weakness. Okay. So next is pestle analysis. So pestle is P stands for political, E is economical, S social, T technology, L is legal, and E is environmental. So this helps you to analyze the industry or that environment from these parameters perspective. Okay, so what I want, so let's say Amazon India की हमने बात किया.
So yeah, e-commerce की बात किया. So let's take e-commerce India. So I want you to think of 2 points in each. 2 points under political, 2 points under social, 2 points economic, technology, and some of the examples are being already mentioned on the slide. For example, when you're looking at political, so you need to think of any government initiative, any regulation, any taxation issues could be under political. Social is your lifestyle, standard of living, education, stuff like this, and economic factors, purchasing power, economic growth, GDP, numbers like this. Technology, of course, is self-explanatory. And L is legal environment, again, from a law perspective, okay, which overlaps with the government piece. And E is an environmental issue. This is, again, a new piece which has started getting focused from an industry perspective, from business perspective. In 10 years back or maybe 20 years back, India my environment is not something that you will think of from a business perspective. But now, of course, because the regulators or the government has got it. This has got it, their attention. That's why you as a business entrepreneur also have to think through these pieces. Okay, so 5 minute देता हूँ. I want each of you to think through 2 points under each of the category: political, economic, social, technology, and of course on the e-commerce segment. ठीक है, फिर discuss करते हैं. Yeah.
Anji, so have you thought through these points? We'll start with political. Hanji, political में कोई point? Sir, the biggest point is political factors. The one of the major points is again the digitalizations by the political. I mean, it was a point which is already being promoted by the political party, which is in India right now, BJP. So sir, if we look at previous 6 years, past 6 years, the government is stable, and this government is only promoting digitalization and commerce or platforms in every terms, like in payment procedures and in you can say these trading and everything. So this has been this can be a very good political point for a business model like Amazon. So it is a good political factor which has affected the business to grow. Correct, Bhavesh. So I think जो आपने technology digital की बात करा वो I think it started from demonetization in India. That's why the government at that time, BJP and the current government, which continues to be same, the focus from a digital perspective came in. Another political perspective जो point मैं add करना चाहूँगा is the lockdown. Because government restrictions थी वो lockdown के ऊपर and then again which in turn indirectly Exactly, sir. brings the focus on the online delivery model, which is again an e-commerce business. ठीक है. Let's look at economic factors. Sir, economic factors mein, sir, like you said, you gave a hint of GDP. So GDP has been, let's keep it aside the pandemic wala part. Before that, the GDP has been, in a growing curve. So it has obviously created a very good environment for business like Amazon or any e-commerce business. So this is one of the you can say the main economic factors which has which like helped Amazon and in business like these to run effectively and efficiently in Indian markets. Second, sir, as we all know that Amazon INC is a sister concern or is a part of Amazon USA. So as we take a point from this slide, labor costs. So it is a economic condition of India, which is obviously the rupee is at a lower side as compared to a dollar. And then if we look at from the investment purpose, so the economic condition of India has helped Amazon USA to invest in India. You can say at a favorable position. So they do not have to invest much on the labor cost because of the economic condition of India as compared to USA. So it is obviously the dollar is heavy and they don't need that much of amount of investment which is required in US. So this is one of the economic boost as well to Amazon as a business. Yeah, correct. These points also contribute on the economic side, so very well covered. So moving to technology, I think digitalization की बात किया तो again that overlaps between political and technology. The internet usage of smartphones, because of the smartphones and placing an order or purchasing or doing shopping through smartphones is a different ball game vis-a-vis placing an order through a laptop or a PC, because smartphone stays with you for most of the time during the day. In fact, when you're traveling and when you're
in office, it still stays with you. So your browsing on the Amazon app is more aggressive vis-a-vis what you can do when you're sitting in front of a laptop or a PC. So I think Exactly, sir. Yes. So, sir, yes, technology points. Exactly. These point matters. Coming to social factors, social standard of living, Sir, lifestyle. ये तो इंडिया के लिए India is a very good platform for any of the companies because social factors are most favorable to any of these companies or any of these organizations if we compare to technology or any of those stuff because first point it itself says population growth rates as we all know that India is densely populated, so whatsoever business will get into the Indian market will have a large number of customer base as compared to any other country. So yeah, Isha, you want to say something? Just saying, like, so the people, like, unka attitude towards the new these online platforms. So they are not ready for that. तो उनका attitude change करना है, उनका behavior according उनको aware करना is correct. So that's also a social challenge. जो एक है change of mindset हुआ है काफी, especially the relatively younger generation has, I think, started realizing that this old concept, not concept, the belief that you need to go to actual physical shop to buy or see something and feel and touch it before you place an order. I think that has changed, but I think still, as I think Bhavesh ne pehle bola tha ki older generation, his grandparents or probably generation of that era probably still has some reluctancy or still has their apprehensions to use online. So yes, that mindset has changed, but I think more impact has been changed in the younger generation vis-a-vis the old generation. And this lockdown has, I think, has forcefully forced this change in especially in that generation, because I've seen in my neighbors some of the old parents whose kids are not in India, who are out. Earlier, they generally don't used to get into this online. They prefer to go and purchase vegetables, fruits for themselves or grocery. But of this lockdown, I helped them in initial phase of how do you do all this. But now, and I've seen whenever I interact with them, they've become comfortable. They're using on a weekly or probably daily basis. And stuff like this, and now I think that mindset is slowly and slowly, because of this situation, has changed for some of the people. So that's again a social factor of the mindset. So yeah, that's political, social, technology. Any point that we missed? Anyone want to add anything on political, economic, social, technology? Sir, I can't think of any more points as of now. होंगे obviously, but अभी as such कोई आया नहीं दिमाग में इतना. Okay, so one of the point which I can think of in the legal is the issues pertaining to payments, digital payments. So, for example, अगर आपने कोई payment कर रहे हैं Amazon को और by mistake that something happens and payment happens to wrong account, then what? In India, we still do not have a law around that pieces. Whereas some of the markets like US, UK still have some stronger laws around these pieces. You have to share data security. It's again a legal issue in India. So when you download Amazon or use Amazon, there is a behavioral pattern that's get recorded at Amazon end. So there are a lot of data security issues. Amazon क्या आपका data share करता है? जैसे आप Amazon पे और मैं monthly अपने ग्रोसरी खरीदता हूँ, एक पैटर्न होता है परचेज का, मैं इतने का ये सामान खरीदता हूँ, इतने का ये ब्रांड को प्रेफरेंस देता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव. सो Amazon सब रिकॉर्ड कर लेता है. Now, ideally, this is my behavioral pattern. So
Amazon should not use it for any purpose, but India में ये data security issues बहुत इतने strong नहीं है law side पे, so that's why these people are able to sell the data behavioral pattern to some of the companies, which I think it's an issue. Okay, so that's on the legal side. Environmental side पे अगर आपको याद हो, in some of the states in India, there was plastic ban. There were a lot of restrictions on using this brown paper or brown cardboard kind of a material, because Amazon, Flipkart is on the delivery business, correct? Online delivery business. They have to pack a lot of product into the plastic stuff. So there were some issues in some of the states, especially I think Delhi and Mumbai is one of those states, couple of those states where there was a restriction from the government for these players to use this. So they have come out with some alternative solutions in terms of paper packing and stuff like that, but I think still is an issue for them. So those are the points on the legal and the environmental piece. So that's yeah. Sure. So the environmental factors, isn't it related to the climate, natural climate change, like the natural calamities which occurs, unforeseen events? वो भी है, so वो तो हमने लॉकडाउन से डिस्कस किया ही करें, बट उसके अलावा जो एनवायरमेंटल के ऊपर प्लास्टिक बैन है, तो वो भी तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना प्लास्टिक बैन. So अगर Amazon की आप डिलीवरी देखोगे तो most of the delivery gets wrapped in some shape and form of plastic, correct? Yes. So अगर let's assume Delhi में let's assume tomorrow the government says that no uses of the plastic or whatever is being defined is not permitted, then how would Amazon definitely will get impacted, correct? Yes, sir. So that's what the challenge for them. कि वो प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करेंगे फिर. And what if the government next comes and say, okay, paper is not allowed. You can't use the paper because, of course, when you're using the paper, it still impacts some shape and form of your trees, because some source of every source of paper is linked to some shape and form of trees, correct? So more paper means you're indirectly cutting more trees, correct? So if we go in that school of thought, then of course the next challenge and issue would be on these sides as well. वो थैला ही लेके आना पड़ेगा. How we don't know. So these are the issues which probably needs to be evaluated, because there has to be some artificial fabric or some kind of plastic or some kind of a paper has to be created, which doesn't create a problem from an environmental perspective, and at the same time doesn't impact the Amazon delivery business, right? Because अगर ऐसी कोई quality होगी, product को safe condition में कराना वो भी important है, right? You can't deliver product in an open packet, which again creates a problem. And the costing part, let's assume if we say, okay, you deliver in a bag of a cloth, so then I don't know in a bag of cloth whether it will continue to be safe, breakage ना हो जाए. Then at the same time, cost, as if we make it very expensive, correct? Delivery को बहुत expensive करोगे तो उसकी cost customer को bear करनी पड़ेगी, which is again not good for their business. Exactly, sir. So yeah, these are the points of the SWOT analysis for Amazon. Sorry, on the pestle SWOT तो हमने कर लिया. Anybody wants to add anything before we close this? So we've done portal model, we've done SWOT, we've done pestle. Any points? Anybody wants to add in any of these? Okay, so this completes our pestle. So same आगे explanation है. Okay, different, I think couple of industries की. So जैसे steel industry है, fashion है, clothing है, supermarkets. तो अगर आप ये examples देखना चाहें तो देख सकते हैं. We've discussed e-commerce. ठीक है, तो इतना रखेंगे. Slide 48 तक is what we have done today. So we'll probably stop here. Any questions before we wrap this up? No sir. Sir बस एक बार वो दिखा दो, ये slide end तक कहाँ जा रही है, कितने नंबर की slide बची है, मतलब कितनी बची है slide है? यार ये तो काफी है. अच्छा, चलो ठीक. Around 300 odd slides. But इसमें पूरा level 2 है. It is not one topic.
ओके ओके ओके, नहीं ठीक है सर, आज स्वॉट और पेसल रखते हैं बस. हाँ, तो ये in next couple of sessions. So I'm just conscious कि students भी come, so I don't want to run through this. So in next couple of sessions, we'll wind up corporate strategy and then we'll start with the evaluation. That's the plan. ठीक है सर. Okay, thanks. We'll connect to the next class. Bye. Okay sir, thank you, bye.